if I'm not wrong, in our last lecture of economics, we discussed and completed one part of मनी मार्केट्स इन इंडिया. हमने वो डिस्कस करके कंप्लीट किया था मनी मार्केट को. दैट इज द कंसेप्ट कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक्स. Now in our lecture today we are going to discuss the other part of money market in India called as the central bank. So now we would be describing the concept of central bank. First, let me describe what is central bank. I would say central bank is the topmost banking authority which is vested with the powers to regulate the banking sector as well as money supply in an economy. So what is said? Hello? Hello? Am I audible to you? Okay. Thank you. तो बैग में थे. So it is said that central bank is the topmost banking authority. देखो ये एक अथॉरिटी है. अथॉरिटी मतलब इसके पास पावर्स होंगे और डेफिनेटली कौन सा अथॉरिटी है? टॉप मोस्ट, मतलब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला बैंक होता है. दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक. इट इज वेस्टेड मतलब गिवन. इसके पास दो इंपॉर्टेंट पावर दिए गए हैं. There are two important powers given to the central bank. It is given with two powers. पहला पावर उसको दिया है रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, मतलब बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम. द सेंट्रल बैंक इज गिवन
power to regulate the banking sector. It is given with the power to regulate the banking sector. तो अभी वो बैंकिंग सेक्टर को कैसे रेगुलेट करेगा? तो देखो, रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल बैंक तीन चीजें करता है. सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम सेंट्रल बैंक करेगा. It will prepare the rules and regulation for the banking sector. दूसरा, सिर्फ रूल्स बनाने का काम नहीं करेगा, उन सारे रूल्स को इंप्लीमेंट कराने का काम भी करेगा. The central bank will take care that whatever rules are formed are implemented properly. Whatever rules are formed are implemented properly. ये देखने का काम भी सेंट्रल बैंक का रहेगा. और सिर्फ रूल्स बना के उसको इंप्लीमेंट कराने का काम नहीं रहेगा, बट जो बैंक्स इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, उनके ऊपर एक्शन लेने का काम भी सेंट्रल बैंक करेगा. उनके ऊपर एक्शन लेने का काम भी सेंट्रल बैंक करेगा. सो फॉर्मिंग द रूल्स, implementing the rules, forming the rules, implementing the rules, and taking action against the banks who are not following those rules. So that is about the meaning of the central bank. देखो, ये एक रूल्स बनाने का काम करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है. इकोनॉमी के अंदर इट विल कंट्रोल द मनी सप्लाई. नाउ जहां तक इंडिया का सवाल है, इन इंडिया the central banking authority is RBI, Reserve Bank of India. In India, the central banking authority is Reserve Bank of India, RBI. RBI was formed by the virtue of RBI Act of 1934 and became operative from 1st April 1935. RBI became operative from 1st April 1935, formed by the virtue of RBI Act of 1934, but it came into existence from 1st April 1935. This can be one very important objective question in your syllabus. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ.
चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन, बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। So, no doubt, this bank was formed in 1935, but it was nationalized in the year 1949 after the Banking Regulation Act of 1949 was passed. This bank was nationalized. This was taken up by the government and was made the central banking authority of the Indian economy. तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस स्टडी करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. One of the most important questions which can be asked with respect to the central bank, that is functions of central bank. Functions of central bank. So there are various functions. Let us discuss them one by one. The very first function of the central bank is issue of currency. Issue of currency. In fact, it is not wrong to say that the central bank of the country has a monopoly, sole power, has a monopoly to issue currency notes. It issues the currency notes. In India, all currency notes except 1 rupee currency note, from 2 rupee currency note to 2000 rupee currency note, all currency notes are issued by RBI. All currency notes are issued by RBI except one rupee. 1 rupee note is not issued by RBI. All 1 rupee note is issued by the central government. Government issues 1 rupee note, and coins are issued by the government. So बाकी सारे करेंसी नोट्स इशू करने का पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है. अगर आरबीआई के अलावा और कोई पर्सन करेंसी नोट इशू करता है, देन that currency is to be called as illegal, or we can say fake currency. दूसरा is
banker to the government. The central government, the central bank act as a bank of the government. Now, as a banker to the government, what does the central bank do? A, it acts as a banker. मतलब बैंक देखो क्या करता है, accept deposits and gives loans. So on behalf of government, it accepts the deposit, it gives the loans to the government. B, it acts as an agent of the government. मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ में कलेक्शन करना, पेमेंट करने का काम सेंट्रल बैंक करेगा. And C, it acts as advisor to the government. The central bank will act as an advisor. Act as an advisor to the government. It gives advice to the government with respect to formulation of various types of policies and all other things. Bankers bank. It acts as a bankers bank. Now, certainly, dear friends, when we speak something about bankers bank,